एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपको कहा था जैसे ही हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है देन आई विल शेयर अ स्मॉल क्वेश्चन बैंक विद यू, अ लेटर टू गॉड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हियर इज अ समरी ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. लेट्स स्टार्ट. So okay, let me read it first. Okay, fine. Okay, it is okay. Okay, let's see. Lenko was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. However, to his grief, a hail storm came and destroyed his harvest completely. Lenko was very sad. However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. Also, he was an extremely straightforward man. Although working for a long time on the farm, he knew writing. Thus, he composed a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos. As we read in the chapter, कि when Lenko's field was destroyed, he asked God for 100 pesos, but he only received how much? 70 pesos. Okay, at that point he went to the post office and put his letter into the post box. The postman removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed very much. Also, he rushed to postmaster and demonstrated to him that strange letter. Moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. However, on reading the letter, he got very serious. He laughed at the man who wrote the letter. Okay. He laughed this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms. Wait a minute, what is happening this? Okay, so where I was? Okay, here. He asked the employees of the post office to give charity. Moreover, he gave a part of his salary too. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested for by Lenko. The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lenko. Now, what is here in the summary? This is the first part of the summary. Okay, second part जो है वो नीचे है. In this part, there is introduction of Lenko and his faith in Lenko and what happened with Lenko is here. As we have read in the chapter that there was written only more than half pesos the postmaster has collected. Now there is little more than 50 is written for determining that more than 50 okay pesos the postmaster can collect. Okay, now this is the way you can summarize the chapter in 2 to 3 lines. Okay, mainly sometimes summary can be asked to you. Okay, then next part is on Sunday. Lenko once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. The postmaster took out the letter and handed it to Lenko. Lenko was not surprised after seeing the money, but when he counted the money, he became angry on God. He was sure that God could not have made a mistake. So what he do? He took another page and ink. Okay. Now I always lost from my place where I was reading. Okay, the postman took out the letter, handed it to Lenko. Okay, then but he counted it, became angry that he took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letter box. After Lenko had left the place, the postmaster and the employees read the letter in sorry. In it, Lenko had complained to God that he had received only 70 pesos. Also, he requested God to send him the rest of the money. This time, however, he asked God not to send the money in the mail. He said the employees of the what? Employees of the post office are a bunch of crooks. He denoted them as the bunch of crooks. Now, how much he received? 70 pesos. ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था that he got only 70 pesos जो हैं लेंको को मिलते हैं. Okay, now there is raining outside. It's okay, well, fine.
Okay, leave it. Okay, now there is character sketch. Okay, mainly किसके character sketch दिए हैं? लैंको के and postmaster. Okay, so Lanko was a main character. Okay, who had a faith in God, who was a poor farmer, and there is what, who is the sole bread earner of the family. Sole bread earner means कि अकेला वही था पूरे परिवार में कमाने वाला. Okay, he had faith in God. Lanko lived in a small house which was situated on the crest of the hill in the valley. Throughout the morning, Lanko sat in his house and waited for the rain to come. He wished for the rain or the shower for his field in which he had grown his crops, but due to hailstorm, his crops were destroyed. Lanko wrote the letter to God as he thought that he would be the only one to help him in this bad time. He wrote a letter addressing God to send him 100 pesos so that his family can survive in such a difficult situation. Now, अब यहाँ पे Lanko का characteristic, how is told it here that Lanko was a poor man. Okay, and he was the only one earner in his family. And now when his field was destroyed by the hailstorm, so he is having only one faith. His faith was only the God. In the God. So he wrote a letter to God for seeking help from the God as of around 100 pesos. Asking for how much? 100 pesos. Okay, this is not written so clearly. Leave it. 100 pesos for survival of his family. Okay. Now there is a character sketch of postmaster. Postmaster was a fat, amiable fellow. So here firstly this is about the postmaster, that how does he looks. ठीक है, वो कैसा दिखता था. Fat and amiable fellow he was means काफ़ी kind था. He was a sensible and a compassionate human being who was amazed by the depth of the faith in God that is shown by Lanko. Although at first he was amused by Lanko's letter to God, he became serious and wanted to help Lanko because he didn't want his faith to be shaken. The postmaster himself gave a part of his salary and also requested his employees and a few friends to contribute for charity. He felt happy and satisfied when Lanko received the money. This shows that he was a kind and empathetic person as well. He loved to help others. ठीक है, उसे दूसरों की जो क्या है हेल्प करना बहुत पसंद था, यहाँ पे दिखाया जाता है. नाउ व्हाट इज़ यहाँ पे क्या है, पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर बताया गया दैट हाउ वाज ही. अब देखो उसका स्ट्रक्चर पहला कि ही वाज अ फैट एंड अवेलेबल मैन. नाउ ही वॉज वेरी सेंसिबल. ठीक है, जब वो देखता है सच अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग जिसने भगवान के अंदर इतना फेथ है, जिसने भगवान को लेटर तक लिखा है. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंको बाय सेइंग हिज फ्रेंड्स एंड his employees as saying that it is an act of charity for helping a poor man. So this shows his kindness towards the other people. Now here are some multiple choice questions. Okay, so let us try. Lanko was a dash farmer. What do you think in these options what can come? He was a content farmer, greedy farmer, hardworking or satisfied. So I thought that he was a hard working farmer. So what do you think that what can come here? Let me highlight it better for marking. Wait a minute. Highlight करने से ठीक रहेगा ना. ओके लीव इट, छोड़ो यार, हाईलाइट क्या करना है इसे, कुछ नहीं होगा ढंग से यहाँ पे. ठीक है भाई, लीव इट. हार्ड वर्किंग फार्मर. Lanko calls the big rain drops as gold coins, 5 pesos, silver coins और money. Silver coins. So यहाँ पे क्या है, पहले ही जो आंसर्स है ना वो बोल्डेड है, बोल्ड है ना, बोल्ड कर दिए हुए हैं मैंने आपके लिए. ठीक है, तो चलो आगे देखें. Who sent the money
टू लेंको, मनी किसने दी थी लेंको को? इट वॉज, यू कैन सी फर्स्ट आंसर ही आपका हो जाएगा पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल का क्या मतलब होता है? आई हैव टोल्ड इट यू 2 टाइम्स, वीडियो में भी बताया था, इन चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड अभी भी बताया था। ही वॉज फ्रेंडली। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन डैश द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। कंटेंटमेंट क्या होता है ये भी बताया था। इट इज़ मीन्स सेटिस्फैक्शन, किसी चीज़ की सेटिस्फैक्शन होना। ओके, लेट्स कम टू द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो नाउ हेयर इज अ रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप यू पीपल ऑल कैन डू दिस फॉर योर प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस। आई हैव गिवन दिस, देखो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट गिवन है एंड सम क्वेश्चंस ऑल्सो एंड आंसर्स भी आपको गिवन है। ओके, सो यू ऑल शुड ट्राई इट कि आपको समझ में आता है अच्छे से या नहीं। देखो, नॉट लीव इन्होंने यहाँ पे जैसे किस तरह से डिनोट किया है कि क्या है क्या नहीं है ना। देखो यहाँ पे, सो इट इज़ जस्ट लाइक दिस दैट हाउ मच इज़, कि आप किस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, है ना। तो ये देखो आपको ये है एंड देयर इज़ ऑल्सो थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं। ओके, लेट मी सी, विद आंसर्स दिए हैं, है ना। आंसर्स के साथ आपको जो भी है सब करने को आपको दिया गया है। सो यू ऑल कैन ट्राई, यू शुड हैव दैट विलिंग कि हमें करना चाहिए। अगर है आपके पास ये क्वेश्चन बैंक, देखो अब आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप भी आ गए, है ना, कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म इन लेंकोस फील्ड। क्या डिस्ट्रक्शन हुई थी, है ना, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। देन आपके पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखो इस तरह के। ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, देखो आपकी बुक से क्वेश्चन है। इट इज़ फ्रॉम योर बुक, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर बुक, है ना। मैनी क्वेश्चंस आर हेयर दोज विच आर फ्रॉम योर बुक, जो आपकी बुक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक से लिए जाते हैं। ठीक है, देन देखो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखो यहाँ पे डिनोट करके बताया, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बनाए थे उनमें से ही हैं, है ना। सी, ओके, दीज आर द क्वेश्चंस, सो यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फ्रॉम वेयर यू ऑल कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ से आप सभी क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस लेट मी नो दैट यू ऑल हैव प्रैक्टिस्ड इट। आप सब ने इसे जो है प्रैक्टिस जो है कर लिया है, दैट आई शुड गेट टू नो कि हाँ आपको पता लगा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लेंको की क्वालिटी बतानी है। वेट अ मिनट, कुछ भी हो जाता है ना, कि लेंको क्या था, ही वॉज अ फार्मर, है ना, और वो क्या काम करता था क्या नहीं, और संडे को वो बंच ऑफ क्रूक्स किसे कहता है ना। अपने लेटर में वो उनको डिनोट क्या करता है कि वो क्या है, पोस्टमैन जो है एक बंच ऑफ क्रूक है। ठीक है, इस तरह से डिनोट करता है। और पोस्ट मास्टर को वो दिया गया है, देखो एक फैट एमिएबल मैन है, बट फिर भी वो इतना जो क्या है अच्छा है ना, इतना उसके बारे में। वेट मिनट, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, कि बताया गया है ना, ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू ऑल शुड नो दैट हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन नेक्स्ट पास्ट आई विल कम विद योर नेक्स्ट चैप्टर एंड लाइक दिस। इसी तरह मैं आपका जो है क्या करूँगी, एक PDF अगेन आई विल मेक सम क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम वेयर यू कैन ऑल डू दिस। ठीक है, तो इट इज़ बेटर फॉर मी कि मैं इसका यूज़ करूँ, है ना। इट इज़ अ गुड अंडरलाइन, ये अच्छे से अंडरलाइन करता है किया जाए तो। देखो ओके फाइन, लीव इट। तो यू ऑल शुड बी गुड टूवर्ड्स योर स्टडी, आपको अच्छे से करनी चाहिए। एंड दिस इज़ द नोट्स फॉर यू ऑल, यू नीड टू प्रैक्टिस।
सो ईजी चैप्टर है. ओके, थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ सपोर्ट मी, जिस वजह से मैं आपके लिए और लेसन्स लाऊँ, और चैप्टर और बुक्स के लाऊँ. सो थैंक यू फॉर यू. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ let me know. Thank you everyone. Bye bye.